student. I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to continue our chapter 3. Our chapter name is Understand Working with Query, Form and Report. So today we are going to discuss about formatting form. So now we continue this chapter, student, formatting a form. So you can change the appearance of a form by using various options. They are available on the design and format tab. So you can use the firstly using design tab. Click on the logo in the header footer group. The insert picture dialog box appear. You see in this image. Select any picture and click OK. After that, click on the title in a header footer group. Now see, type the student query as the title for the form. Click on date and time in header footer group. The date and time dialog box will be appear. Choose the desired format of the data, date and time and click OK. After that, your date will be inserted. You will find the date and time placeholder in the header footer section. जहाँ पे हेडर फुटर आपने बनाया था, जहाँ स्टूडेंट क्वेरी लिखी थी, वहीं पर आपकी डेट एंड टाइम आ जाएगा. यू कैन मूव द प्लेस होल्डर टू द फुटर सेक्शन आल्सो. यू वांट टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम देयर. मीन्स जहाँ पे भी आप असाइन करना चाहते हो डेट एंड टाइम, वहीं पे कर सकते हो. क्लिक ऑन थीम इन द थीम ग्रुप. क्लिक ऑन द डिजायर थीम. From the drop down menu, you see there are so many design available and you can choose any from there. Using format tab means how can we make formatting form format tab. Using format tab, click on the background image in the background group. The browse button appear. Click on it. उस पर क्लिक करेंगे. नाउ लोकेट एंड चूज द पिक्चर इन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स एंड देन ओके द मेन्यू बटन. सेलेक्ट द फील्ड टू विच यू वांट टू अप्लाई. मीन्स जिस भी फील्ड में जैसे भी अप्लाई करना चाहते हो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हो. कंडीशन फॉर्मेटिंग से क्लास मीन्स कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो. क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन इन द कंट्रोल फॉर्मेटिंग ग्रुप. जो कंडीशन वाला शो हो रहा है, आपको देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो हमारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन. क्लिक ऑन द न्यू रूल इन द कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर डायलॉग बॉक्स. You see in image, under the select rule type, select check value in the current record or use an expression. Under edit the rule description, select the rule, apply desired formatting and click OK. A report is an effective way to organize and summarize data for viewing, printing. A report can be created exactly in the same way as we have corrected for a form. The only change is that after selecting the Create Table tab, click on the report in the report group. Access Create a report and place all the field of the selected table in the report. 4 new tabs appear on the ribbon. आपको रिबन में 4 new tabs शो होंगे जब आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे. When you created report, design, arrange, format,
page setup. Okay, so these are format will become when you create report. Click on the save option on quick access toolbar to save the report. The report object get added in the navigation pane. In right corner your navigation pane you see in screen. Following are the 4 different types of views in which a report can be displayed. Report view. You can view data of the report in view but can't make any modification in design. डिजाइन में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. प्रिंट प्रीव्यू. दिस व्यू अलाउ यू टू सी हाउ द रिपोर्ट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड. लेआउट व्यू. लेआउट व्यू इट प्रोवाइड अ व्यू दैट क्लोजली resemble what the report will actually look like to the user. In this view, you can also edit the design of the report to the some extent, such as change size of various controls. Design view. Design view. This view display the structure of the report, which can be modified and customized as per requirement. This view does not display the underlying data but display expression that are used to generate the content. For example, you may find date function on the header section of the report but not the actually date. Formatting a report. How can we formatting a report? Means हम decorate कैसे कर सकते हैं report को. Like form, you can format a report using different options present on the design and format tab. Okay, for printing a report. Printing a report. To print a report, select the file tab and then click either on the print option or select the print preview option. This view display how the report will be appear on the page. Now it is also allow you to choose the page orientation, page setup, etc. If needed, modify the page size, margin, width and page orientation using the related command for on the ribbon. Now click on the print option. The print dialog box will be appear. You can set the desired print option and then click OK. Now your report will be printed. एक्सप्लोरिंग अ रिपोर्ट मीन्स हम अपनी रिपोर्ट को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द व्यू बटन ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द ऑप्शन. नाउ द रिपोर्ट विल बी ओपन इन द प्रिंट प्रीव्यू layout and ribbon will be display the commands related to the print preview layout. On the data group, click on the drop down arrow and more button and select word. The export RTF file dialog box will be appear on the screen. So select the location where you want to save the report. Give the valid name to report. You will also find the some export option. Select the options as per your requirement. मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही आप ओपन करेंगे. क्लिक ओके. Finally, screen will be appeared on the screen notifying you about the successfully completion of the exporting process. Click on
the close button. Locate the Word file where the report has been exported and open it.